raising the bar. So now our reports will tell you how many numbers of time I have cannulated. Attempt. So I like to have it first. Single pass cannulation. That's what I want. Get it or not different. We want single pass. Okay. How many times did we cannulate the pancreatic duct? When I'm doing my own reporting, this will all be there. Somebody else is reporting, sometimes it's there, sometimes it's there. But for my own self, अब जब मैं ERCP कर रहा होता हूँ तो I want one cannulation and I'll spend time, but I don't want to go twice. Okay, and we are successful in significant number of cases first time. We don't bother doing that. That we feel would obviously reduce the risk of pancreatitis big time. We don't inject at all in pancreatic cancer. I don't know. I don't inject in CVD unless I've actually crossed the stricture. I will cross the stricture with wire. My cannula will go up. That's when I'll start injecting. And then keep on coming. Then I'll inject, and I know that I will drain the system. What we have learned in our practice, and this is Pakistani practice, is that our scope cleaning is not as good as the West. We reuse excessively. Overall, our systems are not as good as the West or the developed world. We cannot. Our infections are higher, and the main source of infection is when you have a system which is closed, and you inject dye, and you don't drain it. So take your wire beyond the stricture, take your catheter above it, you know you will drain it. Now inject. And best is you aspirate. Okay, if it's a very tight, very dilated system, aspirate 10 cc, inject it. What is your recommendation for us if we could not cannulate in the first attempt or second? No. What should we do? What I'm saying, ये तो bar raise कर रहे हैं ना हम. No, suppose we are attempting, but we could not attempt in 5 attempts. No. You have to give yourself time. We should refer the case to another senior consultant, or we should wait for. You need to give yourself about. I think it depends. आपको थोड़े करने के बाद खुद अंदाजा हो जाएगा. मुझे पता हो जाता है. I think Khalid का भी यही होगा. If I don't cannulate in 2 minutes, I won't cannulate. I know that. मैंने 2 मिनट में मैंने नहीं किया ना, मुझे पता है नहीं हो ही गई. तो मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? Then what you would do? Then I go straight to needle knife. Needle knife, double wire technique, whatever, depending on patient के साथ से. But this is at our level. 26 years. No, sir, we are talking at our level. At your level, you continue trying. If you are going into pancreatic duct, ठीक है ना? The least you can do is put a pancreatic stent come out. You say, call somebody else. आपकी यूनिट में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको आके हाथ पकड़ के क्या 1 मिनट ठहरो इससे होता है. जैसे उन्होंने कहा ना, यार आपसे नहीं हो रहा, आपने 5-10 मिनट, मैं कितनी देर देता हूँ ट्रेन, मतलब जो लोग नए कर रहे होते हैं कितनी देर देते हैं. सर अगर एम्प्यूला को मैसअप नहीं करो तो करते रहो. अगर हम पीछे बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला okay, so we are confident that we will take you out of it, because it's not going to happen the first time with you. Not at all. You shouldn't give yourself numbers, not at this stage. जब आप, I think when you've done 1,000 cases by yourself and your cannulation is around, by that time you should be doing about 80, 85, at least 85%. At that time then you will know. कभी-कभी मैं एम्प्यूला को देखता हूँ, मैं इन लोगों को बोलता नहीं होगा. कोई सवाल ही नहीं, मुझे पता है कि इतना फ्लॉपी, इतना ऊपर नीचे, ये लोग कर रहे होते हैं तो मैं वेट से कैसे लगे सर. अगर सीबीडी में 3 स्टैंड्स पड़े हैं, हमें रिट्रीव करना है, तो आप क्या कहते हैं हम लैंडर्स के लिए कि हम 1 by 1 निकाल या 3 एक साथ निकाल 1 by 1 ऑलरेडी. अगर 3 साथ निकालते हैं जैसे मैं कभी-कभी करता हूँ, 2 वो तभी बन जाएगा. I think so. I think so, because why? उस वक्त होता है कि हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा. स्कोप के ऊपर भी स्ट्रेन पड़ता है.
अगर आपने देखा हो मैं अंडर फ्लोरो निकालता हूँ, आई एम टेकिंग मोर देन वन स्टेंट आउट, आई विल ऑलवेज यूज द फ्लोर बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं जोर लगा रहा हूँ आगे फंसा हुआ। यू सी दैट दैट्स कमिंग आउट वेरी स्मूथली। सजेशन ये कि 1 by 1 नहीं। उस्ताद अभी आपने एक और बात बताई, you said when you're going into the intrahepatic you talk about 10 French 12 centimeter 15 centimeter. So is it a recommendation that when you're crossing the quota going into the intrahepatic you should decrease the caliber 8.5 डालें या Khalid and Mustafa, if you go into intrahepatic ducts, is there any advantage of putting in 8.5 versus 10 French? To me, it doesn't look like it. Where's the size of the duct? Yeah, usually it's 8.5, 10. देखो ना 8.5 और 10 में कितने का फर्क है? 1.5 फ्रेंच का। 1.5 फ्रेंच means 0.5. No, 0.5 mm. 3 French is equal to 1 millimeter. 1 millimeter. Yeah. 33 3 millimeter. 3 French is क्या? Is 1 mm. What is the 1 mm. 1 mm. So 0.5 mm का फर्क है। I mean, you know, incredibly double. No, what was serious? The question was that is it safer to place 10 French 10 intrahepatic system में because ducts थोड़ी पतली होती है? 8.5. Yeah. I I mean, personally. in transplant patients, I put in 3 10 Frenches. You have 2 10 Frenches. I I don't think it matters. I don't think there's any advantage. We don't even keep 8.5. No, I mean in our system, ऐसे आ गया हो तो आ गया हो, मैंने तो कभी यूज नहीं। I would either use 7 or 10. Those are the two we use. I don't use the third unless वो free में कोई दे गया हो तो हमने डाल दिया। Okay, now this is what I was teaching you. यहाँ पे आपको बताए थे। Khalid will show it very nicely to you. I know he's got a beautiful thing. ये आ गया ना? ठीक है। Where do we need to go? Here? That side. Big wheel. All I did was ये है, rotate clockwise, big wheel up, and so When you say what big Khalid, wheel, you say big wheel towards you. ठीक है, it's like if Big we were wheel on the towards same you. page. Sorry, Then big wheel मैं towards big you. wheel up ही कहा करता हाँ, हूँ. okay, मैं big wheel up again. And keep your big wheel up as you're advancing. No, आपने rotate क्यों किया? आपने जाना क्या 1 मिनट है? Where is your नहीं, you saw the pylorus, right? Yeah. That's the pylorus, right? So now all you need to do is just keep advancing. ठीक है? और big wheel को आप रखें, अपनी तरफ करें, हाँ अपनी तरफ ही रखिएगा, इसको change नहीं करते. Big wheel now remains there. ठीक है? Even in a dummy, the principle should remain the same. You should get in. तो जब ये ऐसे होता है, उसमें भी all I do is I bring it back here. ठीक है ना? Straight किया, and then big wheel आपने ऊपर रखा हुआ, इसको ना हिलाएं. You see what I do is I'll tell you this. एक दफ़ा आप इस पोजीशन से आए, वापस ही आ गए, ठीक है? अब now this whole thing is going at the same time. Now this is going to stay this. ये अब नहीं हिलेगा. This will now keep like this, and I'll keep going, and then अब now नीचे मैंने इसलिए किया कि I can't see where the opening is. थोड़ा सा मैंने नीचे करा, and I'm through. Because we know that pylorus is at 6 o'clock, and so I needed to see that. So once you've done that, you then pull back like you would, and वो आपको थोड़ा सा ह्यूमन उसमें ज़्यादा नज़र आ जाएगा बेहतर, and this should be where you want it. It's not about, इससे बहुत अच्छा आपको उसमें हो जाता है. Obviously this is mainly, we use this mainly for that, क्या बोलते हैं आप, exchange for the wire. I try not to take this out. You can leave this here and you can practice if you want to, but काफी चैलेंजिंग आर्ट है. ठीक है, तो ये जस्ट अबाउट इसमें थोड़ा सा इसको आपको करना पड़ता है, बिकॉज वो ठीक है. अब ना द आइडिया इज इसमें आपने हमने जो आपको बता रहे हैं, बिकॉज अब सारा वायर एक्सचेंज का काम है,
आप स्टेंट डाल रहे हैं वायर एक्सचेंज, आप बलून डाल रहे हैं वायर एक्सचेंज, आप कैनुला स्फिंक्ट्रोटोम से वायर निकाल रहे हैं, दूसरी कोई चीज़ डाल रही हैं. So wire exchange is very very important, and wire exchange is dependent after tech or app. So this I would just focus on this and see can you cannulate and then just do a wire exchange. अब अपने स्कोप को नहीं हिलाइएगा because you need to. Who was asking me? किसी ने मुझसे पूछा था, I don't know. You know, you really become good in ERCP when no matter what you're doing, your position doesn't change. अभी आप इन दोनों को देखेंगे, I'm sure they'll be talking, सब कुछ हो रहा होगा लेकिन पोजीशन एम्पुला की चेंज नहीं हो रही. ठीक है ना. उसका होता क्या है, you don't realize, and I'll show you. इतने आराम से आप जरा सा यूं है ना तो अब आपका पूरा सिस्टम चेंज हो गया और आपने कहा शिट यार ये क्या हो गया. कभी कभी मैं पहले मैं नहीं करता, जानबूझ के मैं ऐसे घुमा के दे देता था. अब वो उन्होंने क्या किया, पहला आपका रिएक्शन किया, आपने देखे नहीं कि किया कि आपने ठक अंदर डाला. अब वो उसके बाद आप यू नाउ इनटू अ फिक्स. Who's that? Who's that? Nothing beyond. Oh my God, Nadeem is there. I can't believe that here. Okay. So let me help you a little bit. Okay. So we pull back a little bit. इतनी मुश्किल से मैंने पोजीशन बनाई. Okay. So this is a little longer position than what you would like, but okay. I'll just pull back now. Pull your scope back, please. Yeah, pull back, pull back, pull back. Pull back scope. No, so wait a minute. I'll have to set it up for you. There's a problem with the mannequin. It's not really close to the. But once I've got it positioned, then I don't want you to move it. Okay. I think that's as good a position as you're going to get on this mannequin. But now the key is that if I get this position when I'm doing an actual ERCP, and it's a difficult position for the ampulla, then I will make sure this position doesn't move. Also, if I'm doing this, I will see whether this movement is actually, what is it doing to my ampulla? Is it going away? Is it going to the right? Is it going to the left? So all those movements, you should know what you're doing so that you bring it back to where you want. So this is, for your stage, I would just lock the wheels here and try and see if I can cannulate it, okay? But this is not about cannulation, this is not about success here. This is just about wire exchange, because today ERCP is all about, it's an integral part of ERCP that you should be able to communicate with your tech, okay? At this stage you lock all the wheels, right leg up, down. I normally don't lock, but at your stage, if you do that, I don't think there's anything wrong. Ji, doctor. Now get your cannula out. Okay, na? And rotate. Yeah, excellent. Very good. Well done. You're through. Now put the wire in, please. Just ask your technician. So we want you to see how you're going to communicate with your tech. डालो थोड़ा सा पुल बैक करें. No, don't touch the scope. Don't touch the scope. Just put cannula, pull back. Now, more. Okay, we've got the wire out. You're in the CBD. Okay, great. Keep. Now I want you to take this sphincterotome out and leave the wire in. So I want you to wire exchange, and then we can stent the patient. When you have done this, stop. So once you've got the wire there, you have the elevator down. So this is going to lock your wire and stop it coming out. And while you now pull this back, and she will keep advancing it. And your aim is that this orange color and the blue, this should remain where it is.
how many times in your practice have you when you were doing, you continue sir, I'm not going to talk to you at all, I'm talking to the other. हाँ हाँ तो लेकिन कैसे करेंगे, पहले ये तो होना, बोले कोई बात नहीं, we'll cover it up. उनको तो अभी तक जो करवाए नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ कि आप हैंड्स ऑन में एक को ले लो, अभी कंटिन्यू दिस, तो उनकी टॉक, इसके बाद मैं स्टॉप करता हूँ, टॉक करा फिर इसके बाद जो दिन 2 का हो गया उनको आप वहाँ ना, ठीक है, ओके सुने लग नहीं रहा. Okay, so you've got the wire in your position में है, right? And you've taken the canal sphincterotome out, right? Okay. ठीक, it's fine, it's perfect. This is not about placing stent. This is about just understanding and developing a communication, developing understanding with your tech. You're not going to have these techs when you go. You need to talk to your techs and make them understand कि भाई जब मैं कह रहा हूँ एडवांस करो तो क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ अंदर डालो तो मतलब अंदर निकालो बाहर करो, ये लैंग्वेज को अपनी एक सेट कर लें, so then they understand. फिर कुछ after a few cases then it's natural. You don't even have to tell them, they understand and they're doing it. ठीक है, so once you've placed the stent, then you keep on advancing the stent with पहले स्टेंट को अंदर कर दिया ना. दूसरा ये कि you want to look at your assistant. आप देखें कि उनको पता है कि she has to straighten her catheter to get the stent in, क्योंकि जितने loops होते हैं उतना मुश्किल होता है advance करना, तो वो भी experience से आता है. So when you are advancing your stent and catheter, I keep my bridge down, elevator up, so that when the catheter, guiding catheter will come, it will knock. That's when I'll let it go. Okay? And the aim is to make sure that your wire color remains the same. So your wire is not moving out or in. You don't have to use fluoro for that. Okay, जब वो knock करेगा and it will stop going, that's when you let go of this. ठीक है ना? हाँ, छोड़ दें आप, इसको उठा दें. Right? Now advance. Yeah, now advance. Well done. Well done. Keep going. Yes, good. 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 Right. Excellent. Remember these black markers are about 6 centimeters. ग्लाइडिंग के लिए तो मार्क है, ये कहाँ पे आइडिया होना चाहिए? कौन सा? जो मार्क हम देखते हैं. Okay. There are radiopaque markers at about 5 centimeters, 6 centimeters apart on the guiding catheter. So the distal most mark should be above the stricture where you want to place the stent, a few centimeters above that. And then the rest don't really matter. Because the one that's the distal most has to be above the stricture. हो गया? Now you need to advance. Yeah. So now you advance the stent. Yes, no more advancing. No more advancing because wait a minute. So now pull. She will pull back and you advance this. Open करो. आपने उनको बोला release करने को. हाँ तो जब आप उनको release करोगे तब वो बढ़ेगा ना. Release कर दें. Yeah, release now. Release this system comes as a single system, okay? So initially it's locked, so it works like a single system. Stent won't go, this is not separated, right? This is attached here. When you've reached, when your guide wire is where you want it to be and now you want to release the stent, you then ask your tech
to release the stent from there, and now the stent will start going in. ठीक है, इसको ना करें, बट इसको ना छुएं आप. जा रहा है अंदर, जा. No more advancing, no. ठीक है, pull back. Pull back. No more. That's probably because. Let me have a look. That may be because of this. Well, it is. So अब एडवांस करें. तो पहले प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है ना. Don't worry because we are not in a human, so we can take time. इसको आपने टोटल रिलैक्स किया तब ये अंदर जाएगा ना. अगर आप इसको बंद करके रखेंगे तो ये नहीं जाएगा. ठीक है, अब आप एडवांस करेंगे तो फिर उसके बाद बिग व्हील को अप करेंगे. ठीक है, तब अंदर जाएगा. पुल बैक बेटा. Yeah, see, she is pulling back and I am advancing. Now you advance. जब आपने पुश एडवांस करना है तो इसको ऊपर रखना है, फिर उसके बाद इसको नीचे करना है. क्या ओके, गुड. अब एडवांस करें, ऊपर तो करें ना. नहीं बेटा, नीचे करें ना इसको. देखें, जब आप ऊपर करेंगे तो वो अलाउ करेगा निकलने के लिए. जब आप नीचे करेंगे तो ये जो रुकेगा नहीं, ये उसको पुश करेगा अंदर. ठीक है, ये थोड़ा सा रिलैक्स करें पहले तो. यू आर वेरी टेंस. दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, सो वी हैव नो इशू. पहले आप इसको समझें डॉक्टर साहब कि इसका क्या फंक्शन क्या है. इसको एलिवेटर कहते हैं ना. एलिवेटर जो है ना, वो आपके इसको स्टेंट को एलिवेट करेगा. जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये रास्ता खोल देगा ताकि आपका स्टेंट अंदर जाए. जब ये अंदर चला गया, अब आपने अगर इसको ऊपर किया तो वो स्टेंट को देखें उस तरफ एडवांस पुश कर रहा है. ठीक है, सो यू नीड टू डू. जब थोड़ा सा आपने अंदर डाला, उसके बाद फिर इसको ऊपर किया, फिर थोड़ा सा अंदर डाला, फिर इसको ऊपर किया. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू. एक मिनट. फ्रीज हो गया है. इसको अनफ्रीज करो बेटा. ऑफ करके ऑन कर दो यार. आप थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, करना ज़रूरी नहीं है. पहले समझ के करने में देन इट विल मेक सेंस. अगर आप जस्ट फॉलो करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना. अब आप करें इसको ज़रा. ठीक है, चलिए पुल बैक करो बेटा. आप इसको अंदर डालें, लेकिन अब अंदर कैसे जाएगा. ऊपर करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, नीचे करेंगे तो ऊपर जाएगा. देखा, लाइक दैट. अब आप इसको छोड़ें. आप इसको एडवांस करेंगे तो दोबारा खोलेंगे, फिर अंदर डालेंगे, फिर दोबारा ऊपर करेंगे. ट्रेनिंग होती थी हमारे रेफरेंस पॉइंट बनाने के ऊपर बड़ा एक विशेष होता था कि जी रेफरेंस पॉइंट बनवा के आप टेक्नीशियन के साथ. तो द रेफरेंस पॉइंट वाज वुड बी द पॉइंट वेयर दे वुड होल्ड एंड कीप द वायर व्हाइल यू आर पुशिंग इन द कैथेटर फॉर द स्टेंट. So is it a utility now or is it like the old system where they ओल्ड सिस्टम में लगा तो नहीं. ठीक है, गुड. इसलिए नहीं जा रहा कि उसमें थोड़ा सा मसला. एक मिनट है. देखें, पहले आप सिस्टम को समझें. आप वहीं पे है ना जहाँ आपसे मैंने अंदर डाला. ठीक है, थोड़ा सा अंदर डालना पड़ेगा इसको यार. इसको थोड़ा लुब्रिकेट करना पड़ेगा. ओके, सो try and see if we can do it this way. Okay, pull back karo beta. This, the reason for that is this. This is something that you're not going to see otherwise. So you see, when you're reusing the guiding pushing catheter, it will eventually become a problem. Okay, especially if it's tight, like here, it is tight. Okay, so if I was to advance with this, then it is going to become more and more crumpled and not work. So that's the reason. But you understand, iska jo principle hai na, isko we'll make sure that you do it again. And what we're going to do now is have Khalid come and give us a talk on
इसको निकाल लो बेटा, रिलीज करते हो, लॉक, टेक एवरीथिंग आउट, ठीक है, बट डोंट टेक द स्कोप आउट, ओके, लीव द स्कोप हेयर, बिल्कुल इसी पोजीशन में, ठीक है। तो इट्स अंडरस्टैंडिंग ये करना क्या है, ऊपर करें तो सिर्फ एलिवेट होगा और रास्ता ओपन भी हो जाएगा, सिर्फ एलिवेट होगा, और नीचे करेंगे तो ओपन हो जाएगा। नहीं, जब आप नीचे करेंगे तो एलिवेट होगा। अच्छा, नीचे आपने स्टैंड को एलिवेट करना है, नीचे लाना है, अगर एलिवेट करने के लिए तो नीचे लाना होगा, ठीक है। छोड़ दें आप डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश करें। ये एलिवेटर है, एलिवेट का मतलब है जो भी चीज़ इसमें होगी उसको वो ऊपर उठाएगा। आप जब स्टैंड डाल रहे होते हैं तो आपने स्टैंड को ऊपर उठाना है, नीचे लाना है, ऊपर उठाना है, तो एलिवेट करेंगे ना। ठीक है। जब स्टैंड को अंदर डालना होगा तो इसको आप रिलीज करेंगे एलिवेटर को, ताकि वो जगह हो बाहर निकलने के लिए। सो यू ओपन इट अप, रिलीज इट, बाहर निकाला, डाउन, अंदर, फिर थोड़ा खोला, अंदर डाला, फिर ऊपर कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट। मैं आपको करा दूंगा। We don't want to do this when we are with the patient. So what we're going to do is have Dr. Khalid Hassan give us this wonderful talk that he has as making cannulation